You cannot. Tell me you cannot. Okay. All right. Give me a minute. Some people are joining in. I would like you all to put your attendance in the chat box. I've shared the Google form for attendance. So please do that. Make sure you've done that. And the topic for today's session is let's calm down. As you can see on your screen, just give me a minute and we'll then start. Yes, so the topic for our session today, जैसे आप सब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर लिखा है चलो खुद को शांत करें, let's calm down. I'm sure you all would have learned some things from the past sessions, and we'll do a small recap and try to understand what will we do in today's session, right? Welcome. Great. Thank you everyone for your responses and for your turning your videos on. If whoever can, please do that so that I can see you. So to get us started, these are some norms. Let's be kind to each other. If anybody shares, let's not judge them. Let's listen actively. Let's keep everything confidential. Does anybody know what confidentiality means? Anybody would like to share what confidentiality is? यहाँ पे लिखा है सामने confidentiality is the key, right? Does anybody know what is confidentiality? No. So confidentiality means कि what? Yes, tell me. बताइए बताइए. ऋषभ आप कुछ कह रहे थे? मैम सीक्रेसी रखना. Secrecy रखना. Okay, जानवी. Yes, ma'am, I was about to say the same thing. किसी चीज को secret रखना. Okay. And so what we do is if anybody shares anything here in the session today about themselves, it's important that we keep that confidential. We respect them. हम बाहर जाके उसके बारे में बात नहीं करें, हम बाहर जाके उनको जज नहीं करें, right? That is important, and we'll participate. The more you participate in the session, the more you will learn. Okay, so I'd like, as I said, cameras on and mics off. If anybody wants to speak, you can raise your hand. Chat box is on. आपको कुछ भी anything, you can do that, and you can use the reactions. Us first is what makes me react strongly, to understand what makes me react strongly. So if you would remember from the past sessions, right, you would have talked about emotions, feelings, and how they're felt in the body. Does anybody remember? So a little recap with us about how we are feeling. Our body sends us cues, examples. किसी को नहीं याद है? I cannot see a lot of you. Can you all turn on your videos and tell me if you don't remember, or if you do not want to speak on mic, you can also put it in the chat. What do you remember from the last few sessions? Anyone? No. So nobody is going to participate. So how would we learn today? Okay, I'll share. So we learned our body communicates, okay, about our emotional well-being. Okay, yes.
Sorry, just a minute. Yes. We learned our body communicate with us about how we are feeling and how we use our goals to purposely influence our emotions. Our mood changes with our emotions. Yes, mood changes with our emotions. Our body reactions changes with our emotions, right? And that's why we will be now understanding what makes me react strongly. There are certain situations in life which make us very angry, very afraid, right? तो ऐसा क्यों होता है? And ऐसे situations में, how can I calm a strong emotional reaction? Is there anybody who feels very very strong emotional reaction? बहुत गुस्सा आना, बहुत डर लगना, बहुत एंजाइटी होना, ऐसा होता है किसी के साथ? Anyone, you can raise your hand and tell me. No? नहीं होता है किसी के साथ? Janvi, yeah? Yes, yes, okay. Okay, if Janvi says hota hai. So now we'll understand of them jab we are very overwhelmed, right? So has anybody heard, have you heard this word pehle? Kabhi? Triggers? No? Okay, no. Sakshi says yes. Parv says no. Sakshi, would you like to share? आपको क्या पता है emotional? So let's understand what are triggers. And मैं बहुत maybe not just right now, but all your life, you can use these when you grow up, having your own families. At that time, managing relationships can become very, very tough. And at that time, you can use these skills. Okay. So we'll now understand what are triggers. So emotional triggers specifically. So as you can read on the screen, an emotional trigger is something that causes you to feel a strong emotion like anger, joy, or fear, often very quickly, right? That means in a short span of time, you feel any emotion very intensely. एकदम से बहुत ज्यादा कुछ भी हो जाते हैं। ऐसा कभी होता है किसी के साथ? So Sakshi says it happens due to some things such as environment or traumatic experiences, right? Very well. Thank you, Sakshi Shukla, for sharing. Thank you. So इन इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में आज हम जानेंगे कि इनके अराउंड हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनके अराउंड कैसे काम कर सकते हैं, and how can we calm ourselves down in these emotional triggering situations जब हमें कुछ समझ नहीं आता. And a lot of times it affects our relationships also. Relationships, anything such as relationship with your family, with your siblings, with your partner, girlfriend, boyfriend, friends, anyone. बहुत बार हम गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं, right? So we don't want our relationships, our studies, our mental health, our physical health to get affected so much. Emotions are not bad, but if not managed. Yes, ma'am, I want to ask. अभी आपने क्या बताया था तभी? कि इमोशनल ट्रिगर मतलब अचानक से जब हम लोग कोई भी इमोशन फील करते हैं जैसे कि डर जाना, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जब हम लोग जैसे खेलते हैं सिबलिंग्स के साथ तो वो लोग हमको डराते हैं अचानक से हम्म बातें से बात करके या फिर अंधेरे में खड़े होकर, तो वो जो इमोशन आता है उसको इमोशनल ट्रिगर बोलेंगे क्या? उसको उसको इमोशनल ट्रिगर बोलेंगे जब हम अचानक से डर गए थे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. You have to identify that if that is a trigger for you or no. So सबकी लाइफ में ना अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं. अभी हम समझेंगे ट्रिगर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जानवी, इज दैट अ ट्रिगर फॉर यू?
or is that a normal like play? Right? Trigger would mean कि आपको वही सिचुएशन बार बार याद आएगी, कभी भी कोई कुछ छोटी सी चीज होगी and you'll get afraid, right? It was a very intense fear. Or if it's a general fear, ठीक है, डराया खेले, हो सकता है it's not a trigger. If not every emotion can be a trigger. Very intense emotion which makes you feel haywire, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बार बार वो चीज याद आ रही है. We'll understand it better. So this, okay, so this emotional trigger can be anything. It can be a word. कुछ लोगों को ऐसा होता है एक वर्ड से ट्रिगर हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ. um, कुछ वर्ड सच एज if we keep, for example, there was a child जिसको बचपन में बहुत बुली किया जाता था स्कूल में, और उसको सब कुछ गलत बोलते थे. फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड लाइक पागल, ये तो पागल है, ये ठीक नहीं है, ऐसे बार बार बोलते रहते. दैट वर्ड कैन बिकम अ ट्रिगर फॉर दैट चाइल्ड फॉर देयर होल लाइफ. सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होके when they get mad, one word, and if anybody around, even in a fun way, says that, they get overwhelmed very easily, right? So it trigger can be a word, can be an action. That action मतलब कोई specifically किसी ने गलत तरीके से बात करी हमारे, emotionally hurt किया, that can become a trigger, an action, or even a situation such as some situation that has happened before and which had a very bad experience in your life. Thing such as आप ट्रेन में कहीं गए थे घूमने फैमिली के साथ, वहां पे ट्रेन हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से ट्रेन एक ट्रिगर बन गया आपकी. ट्रेन में ट्रैवल करना एक ट्रिगर बन गया. एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो इट ट्रिगर कैन बी अ वर्ड, एन एक्शन, even a situation, or even a person can also be a trigger. Okay, think of it like a button, then when pushed makes you feel a certain way without much control. So जरूरी नहीं है कि आपको खुद को वो पता हो आपका बटन क्या है, किससे आपका वो बटन दब जाता है, and you are not in your control then. Or maybe unknowingly other people around you can also push that button without knowing, है ना? उनकी हो सकता है गलती ना हो, बट अननोइंगली वो कर दें और फिर आप कंट्रोल में ना रहें. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, फॉर ऑल ऑफ यू टू नो व्हाट योर ट्रिगर्स आर. आप किसी को पता है अपने ट्रिगर्स क्या हैं? I'd like you to all reflect on anything that makes you feel any certain emotions intensely. कोई ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा डर लगता है. आप शेयर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप शेयर कर सकते हो. इफ नॉट, इट्स ओके, यू कैन चैट, पुट इट इन द चैट. बट आईड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट. ऐसा कुछ है जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है? और व्हेन अ टीचर और व्हेन अ पेरेंट does not talk respect, or when in romantic relationships when your partner does not communicate कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, that can be a trigger for you. Anything. I'd like you to reflect on this. Take your time. So it's written internal thoughts. How do these triggers come? आते कहाँ से? Is everybody here with me? I cannot see the videos turned on. Mindful. Okay. नहीं तो हम distract हो जाएंगे. Then there's no point. हमारे अंदर हमें कुछ थॉट्स आते हैं थॉट्स, किसी को कुछ ख्याल आते हैं. So one is internal thought, second is external events.
हमारे आसपास कुछ इवेंट हो रहा है and other people can trigger strong emotions. Internal thoughts, I'll give you an example that you could not score well in exams, and now you've started having this internal thought that I'm not worthy, I'm a failure, I cannot do this. ऐसे थॉट्स आते हैं कभी, इंटरनल थॉट्स, आपको किसी ने बोला नहीं आप फेलियर हो, बट आपको खुद ही आते हैं. Very natural to have these thoughts. You're a human being and मेरे साथ भी होता है. Or external events such as for the same exams that you could not score well, maybe आपके घर में सिचुएशन ठीक नहीं थी, right? कुछ चल रहा था. For example, when I was young, I was I think 10th or 11th class, and there was a fire at my place. मेरे घर में आग लग गई थी, जिस वजह से I was very disturbed. All my belongings were on fire, जिसके वजह से I could not study in 11th class and my results went bad, right? So external events can also become triggers and other people can trigger strong emotions. Hot thoughts. Can you see the word hot thoughts on the screen? दिख रहा है सबको? तो क्या लिखा है कि hot thoughts are sorry. Hot thoughts are automatic and often negative thoughts that fuel strong emotional reactions. ऐसे thoughts जो अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिक एंड ज्यादातर नेगेटिव होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई कांट हैंडल दिस. जैसे मैंने अभी बोला था ना दैट आई एम अ फेलियर. आई कांट हैंडल दिस, एवरीवन विल थिंक आई एम अ फेलियर. ऐसे थॉट्स कभी आते हैं. अनहेल्पफुल नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं कभी. I want you to raise hands if you've ever experienced a hot thought in your life. Raise your hand. I'm not asking which is the thought, but have you experienced it? किसी ने भी नहीं फील किया अभी तक इतने सालों में? ऐसे कैसे हो सकता है? Raise your hand if you've No? That's good. That's good. But okay. So now, okay, Gautam has raised his hand. Okay. Anybody else who has faced this? कुछ अनहेल्पफुल नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती, जिसकी वजह से खाना नहीं खाया जाता. Raise your hand if you felt this. Okay, only Gautam has faced it. So now what we'll do is we'll have a look at this worksheet. Can you all see this table? दिख रहा है टेबल सबको एक? ठीक है, तो Yes, ma'am. 3 columns you can see, right? Which are hot thought versus cold thought. Second column is emotions that can be caused by hot thoughts. And third is behaviors guided by hot thoughts. If you look closely, पहला कॉलम है थॉट्स के ऊपर कि आप क्या सोचते हो. सोचने में और फील करने में एक डिफरेंस होता है. हमारे दिमाग में क्या सोच रहे हैं हम या क्या फील कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस हम समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट कॉलम है थॉट के ऊपर कि आपका जो थॉट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब हॉट है या कोल्ड है. देन उस थॉट की वजह से आप क्या फील कर रहे हो, और उस फील करने की वजह से आप करते क्या हो, फिर एक्शन करते हो, बिहेवियर. सो देयर इज एन एग्जांपल दैट वील सी एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेल मी. ठीक है, सो एग्जांपल इज I made a mistake. ये आपको थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट. I mistake, I am a failure. ठीक है, आपको जब ये थॉट आएगा, what emotions will come up in your head? They have written in the second column anxiety, frustration, sadness, etc. Right?
अगर हम ये सोचेंगे एंड अगर हम ये सब सोचेंगे, ये सब फील करेंगे, तो हम करेंगे क्या? हम गिव अप कर देंगे. गिविंग अप, नॉट ट्रस्टिंग इन माई ओन एबिलिटीज, राइट? देन इफ यू कैन सी वर्सेस में कुछ लिखा है, मेड अ मिस्टेक, आई एम अ फेलियर, वर्सेस व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन. ये पॉजिटिव कोल्ड थॉट है, राइट? बट इफ यू थिंक दिस, तब भी क्या इमोशन सेम रहे, चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे मैम। चेंज हो जाएंगे. और हो सकता है आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाए, हो सकता है आप गिव अप ना करो फिर, है ना? तो हमें ये समझना है कि थॉट्स के अंदर बहुत पावर होता है. हमें क्या करना है लाइफ में, हमें क्या फील करना है, उनके अंदर बहुत पावर होता है. तो हम कैसे उस पे काम कर सकते हैं? नेक्स्ट लिखा है, इफ यू ऑल कैन रीड, इट्स रिटन, आई कैनॉट माई सेल्फ वर्सेस I know how to control myself and I am going to do it. ठीक है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी, अगर हमारा थॉट है दैट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, ऐसा हम सोच रहे हैं, तो हमें फील कैसा होगा? इमोशन के नाम पता है? एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जॉय, हैप्पी, एक्साइटेड, ये सब क्या होते हैं? व्हाट आर these are emotions or feelings. So if I say control myself, what feelings will I have? I want somebody to answer. अभी फिर से सबकी वीडियोस ऑफ हो गई. आर यू ऑल विद मी? यस जानवी. मैम शायद हम लोग शॉर्ट टेम्पर फील करने लगे, जल्दी आएगा अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो। बिल्कुल सही, गुस्सा आएगा. ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहता है? हमें कैसा फील होगा अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ? गुस्सा आएगा. एंड अगर हमें गुस्सा आएगा जानवी, व्हाट विल वी डू, व्हाट बिहेवियर बी? थर्ड कॉलम में बिहेवियर में क्या आएगा? गुस्से में हम क्या करते हैं? We can maybe hit ourselves. We can maybe hit people around us. Fight, scream, shout. है ना? यस मैम। Right? I'm not saying that anger is a bad emotion और आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. हम सब लोग इंसान हैं और गुस्सा आना बहुत वैलिड है. बट उसके वजह से हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, या किसी चीज को भी नहीं हर्ट कर सकते, है ना? हमें चैनलाइज करना पड़ेगा. तो किसी को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? थॉट्स का इम्पोर्टेंस, हॉट थॉट्स और कोल्ड थॉट्स क्या होते हैं, समझ आ रहा है? जानवी को समझ आ रहा है, ऋषभ को समझ आ रहा है, और किसी को नहीं समझ आ रहा है? नो वन. आई वॉन्ट पर्व टू टेल मी व्हाट एम आई टॉकिंग. पर्व, आर यू हेयर? यस मैम. आपको समझ आया हॉट थॉट्स एंड कोल्ड थॉट्स क्या होता है? यस मैम. क्या समझ आया? That hot thought is a emotion, is a word or a content that might strong emotion. ओके. यस यस, राइट. ओके, थैंक यू. ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स है. यू कैन हैव अ लुक एट दिस. सो फॉर एग्जाम्पल इज, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट मी एंड लव मी. नहीं, आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, थर्ड वाला. आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम और हर versus I can get over this and will be fine even if he or she is not with me. ये हम कौन सी सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं? और रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, यस, व्हेन मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होता है? हाँ, क्या कह रहे हो जानवी? आई कुड नॉट हियर, सॉरी.
मैम आई वाज सेइंग कि हम लोग शायद अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छी दोस्ती रही है। बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं, मेक सेंस। फ्रेंडशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग that we feel I cannot live without this person, right? So what will you feel? कौन सा इमोशन आएगा when you say I cannot live without this person? या जानवी? मैम सैडनेस और डिप्रेशन, हम लोग बहुत दुखी दुखी फील हम्म, करने लग जाएंगे। दुख हो जाएंगे, ठीक है, सैड। और हम फिर क्या करेंगे? एक्शन क्या होगा हमारा? मैम दुखी होने पर तो एक ही होता है, रोना शुरू कर देते हैं। रोना शुरू कर देते हैं, ओके, सबके या लिए फिर हम अलग लोग अलग बहुत हो शांत सकता हो है। जाएंगे। हम्म। या फिर हम लोग बहुत शांत हो जाएंगे, मतलब बात करना बंद कर दे, साइलेंट हो बात नहीं जाए। करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। होता है किसी के साथ ऐसा? मुझे भी बहुत रोना आता है। And it's totally okay, right? But when these negative thoughts go overboard, जिसके वजह से हमारी डेली लाइफ अफेक्ट कर रही है, हम काम पे नहीं जा पा, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम जो काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हम इवन ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, हम नहा नहीं पा रहे, दैट मीन्स दैट you need help. You need to work on your emotional health, just like how you work on your physical health. You have to work on your emotional health. Versus में क्या लिखा है? I can get over this and will be fine even if he or she is not with me. I'll give a few more examples, and I now want somebody to speak who has not shared, talked yet. Okay, so hot thought is everyone has to accept me and love me, versus there are probably some people who do not like me and it is okay. तो जब हमारा ये हॉट थॉट आएगा, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट मी एंड लव मी, तो इमोशन कौन सा आएगा? क्या फील करोगे? कि नहीं, सबको मैं पसंद आनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या फीलिंग आ रही है? कौन सा इमोशन आ रहा है? Should I ask you all to say, should I take names? I don't want to do that. Please turn on your videos and please share with me. What do you think will be the emotion? I don't want anybody to speak जिसने पहले ही बोला है. I want more people to speak so that they have a chance. I don't want you to bore all of you, but to understand कि triggers क्या होते हैं. क्या feel करोगे? Anyone? Sakshi Shukla, would you like to share if you're here? Parv has raised his hand. Tell me, Parv. If someone does not like me, so we will feel sadness for that. हाँ. Action क्या होगा हमारा, Parv? Um, we will not be able to put our mind to anything, focus on it. Yes, 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 yes. True, true. Okay. ठीक है. Now we understand that hot thoughts are something, and there is another type of thoughts which are called cool thoughts. ठीक है? These are the exact opposite of hot thoughts. Cool thoughts are also part of our self-talk, but this inner voice is kinder to us. हमारे लिए थोड़ा kind होती है, right? It is more flexible and allows us to make mistakes. हम गलती कर सकते हैं, हम काइंडली बात करते हैं, ये कूल थॉट्स. We want our cold hot thoughts to replace our cold thoughts. No, we want our cold thoughts to replace our hot thoughts. कि हम ज्यादा शांत रहें, helpful thoughts आए. When we are emotionally charged, it can be very hard for us to think cool thoughts. होता है ऐसा? यूजुअली जब हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या हम ऐसा करते हैं कि हम गुस्से गुस्से में कुछ गलत बोल देते हैं फ्रेंड?
या मम्मी को, पापा को, या बहन भाई, कोई भी, जो भी आपके पास। गुस्से में हम बहुत गलत बोल देते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और फिर रोना आता है। कभी ऐसा होता है? या गिल्ट होता है? जानवी, यू आर सेइंग समथिंग? No, ma'am, I was just agreeing with you. ओके, 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 राइट। सो नाउ विल अंडरस्टैंड some techniques जिनसे हम ट्रिगर्स पे काम कर सकते हैं। डू यू ऑल वांट टू लर्न सम टेक्निक्स टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स? जब आप गुस्सा होते हो, परेशान, स्ट्रेस्ड होते हो, एग्जाम के लिए वरीड होते हो, राइट? वी विल लर्न सम टेक्निक्स नाउ which are self talk. What do you think is self talk? So yeah, anybody saying something? So when we experience these hot thoughts, unhelpful thoughts जो मैं बात करी थी, हमारे लिए जरूरी होता है बॉइलिंग वाटर को कूल करने के लिए कूल वाटर डालना। मतलब गरम गरम पानी है, उसको ठंडा कैसे करोगे? आग लग जाएगी, तो ठंडा कैसे करोगे? उस पर ठंडा पानी डाल के, राइट? ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को, अनहेल्पफुल थॉट्स को हमें कूल डाउन करना पड़ता है, राइट? वी कैन कॉल दीज कूल थॉट्स। ये एक तरह से हमारी सेल्फ टॉक है। अब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ वेर यू बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू टेल योर सेल्फ, कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस, आई नो थिंग्स हैव बीन टफ, बट आई एम टफ टू, आई कैन गेट थ्रू दिस। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? दैट यू मोटिवेट योर सेल्फ, इंटरनल मोटिवेशन होता है? किसी के साथ नहीं हुआ? Yes, ma'am. हुआ है? ओके, इट हैज हैपेंड विद मी टू। एनीबडी? सो वी टेल आवर सेल्फ कि कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस, एंड अदर टाइम्स ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। डू यू नोटिस व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, व्हाट डू यू यूजुअली से? जब आप अपने आप से बात करते हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब हम अपने बारे में अपने आप को बोलते रहते हैं कि आई एम वर्थलेस, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे मुझसे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे से फ्रेंड्स से बात नहीं होती, फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक विच मीन्स, इवन दो ओके आई कुड नॉट स्कोर वेल, बट आई कैन वर्क ऑन इट, दैट डज नॉट मेक मी अ बैड ह्यूमन बीइंग। तो सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से बात कैसे करते हैं। दिस वॉइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर थॉट्स। क्या आपके थॉट्स रहे हैं, क्या लाइफ में या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत ये वॉइस इन्फ्लुएंस्ड रहता है। एंड इट टेल्स अस व्हाट टू डू, हाउ वी फील एंड व्हाट टू थिंक। ओके, but sometimes this voice could be mean to us, can be very rude, mean to us, and that's when we think all the negative thoughts, right? And we have to try and make this hot thought into a cool thought. Sometimes we need to support our cool thoughts with relaxation techniques. Do you all know of any relaxation techniques? हमने triggers के बारे में समझा आज। कुछ situations, कुछ लोग, कुछ कुछ कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जिससे हम ट्रिगर हो जाएं, राइट? देयर कैन बी, बट how do we work on these? There are some hot thoughts and cool thoughts, but now we learn some relaxation techniques through which we can work on this, and you can take that with you home. So these are some techniques for replacing hot thoughts with cool thoughts. Let's suppose you got your result for your social studies test. आपको एग्जाम के रिजल्ट आए, but you only got 40% instead of the 70% you were hoping for. आप होप कर रहे थे कि आपको 70% आएगा,
but 40% ही आया. And failure, no matter how much I try, I will never succeed. मुझसे तो नहीं हो पाएगा. I should stop trying. Has that happened ever? So yeah, has this happened with you? If yes, what can we do about these hot thoughts? क्या कर सकते हैं? These are some questions that you can ask yourself. ये questions है जो आप are there any exceptions to this thought? मतलब आप जब अपने आप को बोलते हो या सोचते हो कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे से तो नंबर नहीं आएंगे, मेरे से कुछ भी, कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, तो आप अपने आप से पूछो आपके पास एविडेंस क्या है. जब कोई केस होता है, जब कोई डिटेक्टिव पता करता है, वो क्या ढूंढता है? एविडेंस, राइट? सो यू हैव टू फाइंड एन एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग. Is there an evidence to say that you're a failure? Maybe things were not right at home. Maybe because of something in your life you could not study well. That does not mean that you're a failure for your whole life. One exam cannot define who we are, right? So, second question, what would I say to my friend if they said this? If they said this line? So, anybody in your life who's very dear to you, who you really love, can be your friends, can be your partner, can be your younger sister or brother, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत ध्यान रखते हो उनका, अगर वो ऐसी लाइन बोलेंगे, आई एम अ फेलियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड आई डोंट, what will you say to them? I want somebody to answer. I want you to answer the second question. Yes, ma'am. मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था. may you repeat please? I am saying second question आप पढ़िए. What would you say to your friend if they said this? अगर आपके कोई फ्रेंड है छोटा, तो आप उनको क्या बोलोगे गौतम? मैम पहले तो मैं बताऊंगा उनको कि ऐसा मतलब अपने बताऊं ये सब. फिर मैम बाद उनको क्या में बोलोगे? उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा. तो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर जो मेरा रिजल्ट आएगा उससे बेहतर आएगा. आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की. कोई और बोल रहा है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके बहुत क्लोज है, वो ऐसा बोल रहा है अपने आप को कि मैं फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आप उनको क्या बोलोगे? मैं उसको भी सेम चीज बोलूंगा. मैं उसको मतलब इंस्पायर करने की कोशिश करूंगा कि मतलब ऐसा हम्म. सेल्फ मोटिव अपने आप को या फिर सेल्फ मोटिवेट कर, उनको बोलूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन करें अपने आप को, ताकि हम्म. उनका मतलब जो नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव में चेंज हो सके. मैं Yes, exactly. Yes. So I am trying to say, just as we motivate other people in our life, we can also motivate ourselves. Oftentimes हम अपने friends को easily अच्छे advice दे देते हैं कि यार तू ऐसे मत सोच, you're not a failure, I know you can do. But we don't do that for ourselves. So the things that you do for others, start doing that for yourself. That is called self-love. Okay. The next question is does this thought help me? जो भी आपका thought आ रहा है failure को लेके or anything in life, a hot thought, a negative thought, is it helping you in any way? And last is, what are some rational, logical reason that I can think of about why this happened? If um
if you've had a breakup, can there be a logical reason? Or if you were not able to score well, can there be a logical reason कि क्या reason था कि आप maybe नहीं पढ़ पाए ठीक से और आप नहीं स्कोर कर पाए? उसका मतलब ये है क्या कि आप फेलियर रहोगे पूरी लाइफ? नो, राइट? So these are some questions. Now, I hope you could take something away from these questions. You can note them down if you'd like. Ask yourself. And next, अब हम कुछ टेक्निक सीखेंगे. Okay. So before doing the activities, I want everybody to open their cameras. And I want to see if everybody's here with me. Because we learned a lot of things. Now we'll do some activities. Okay. So open your cameras. We're about to end. So I want you all to learn some techniques and go and waste time, right? And this is not something that आपको अभी help करेगा, but आपको पूरी life help करेगा. So I want everybody to open their videos and raise their hands. Raise your hand. Turn your camera. अभी बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है. Turn your camera on and raise your hand and let's shake our hands. Shake, 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 shake. दोनों हाथ ऊपर. फोन को नीचे रख दो आप. Shake. Are we here in the moment or are we lost? कुछ और सोच रहे हैं हम. कुछ और चल रहा है दिमाग में. रात को क्या खाना खाएंगे, है ना? We just have 15 minutes, so let's be here and take something with us. I don't want you all to turn off your cameras. Keep it on. So the first technique is breathing exercises. Do you all know how important our breathing can be in our emotional and mental health? So breathing exercises, when we take deep, slow, long breaths, we are sending more oxygen to our brain. ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है दिमाग को और बॉडी पार्ट्स को भी, which improves our focus and concentration, which can help us in so many ways in life, right? We also reduce the stress response by signaling the brain to not worry, to remain calm, which automatically reduces stress, right? So I'll give you an example. There is a research which says that the slower we breathe, the longer our lifespan is. Lifespan क्या होता है? कितना लंबा हम जिएंगे, कितने साल तक हम जिएंगे, right? The slower our breath is. What does slow and long breath, short breath mean? Means we're so busy these days, पढ़ाई में, खाने पीने में, or just pursuing something, tuition or everything, that our breath becomes very fast. कभी नोट करके देखो, हाथ रखो यहाँ पे और नोट करो आपकी ब्रेथ अभी तेज है या स्लो है. यहाँ हाथ रख के देखो. हार्ट बीट या ब्रेथ तेज स्लो है. It has to be slow because of our lifestyle these days. Our breath has gone very, very high, which is not good for our health. I'd like to tell you is that elephants breathe very slowly. उनका breathing in or breathing out बहुत slowly होता है. And that is one of the reasons that they live longer. They have a long lifespan. Just like that, human beings का lifespan कम होता जा रहा है. कि कितने साल हम जिएंगे, क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हम बहुत तेज breathing करते हैं. That's why we have to intentionally sit for 5 minutes and do deep breathing. बोलते हैं ना, meditation, deep breathing.
हमें टाइम निकाल के करना पड़ता है ना. So shall we all do a few deep breaths together today? करें. Turn on your cameras and I'll guide you. Turn on your cameras. Let's sit straight wherever you're sitting. Sit straight. Turn on your cameras. Make your back touch the surface. Relax. Make back पर strain नहीं डाल रहे हो. You can keep your eyes closed or open. Whatever is comfortable. If you close your eyes, it can help you relax. Place your hand on your heart and your stomach. So your right hand, take it up and put it here, left side पे. Heart का है आपका. Left side पे, put it here. And the left hand below your stomach. Stomach पे रखेंगे. Support our body. ठीक है? Close your eyes. Close your eyes. We'll breathe in and breathe out. First, we'll breathe in for 4 seconds. We will hold the breath for 4 seconds and then we'll breathe out for 4 seconds. Okay? So let's start. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Stop. Hold. 4 seconds. 2, 3, 4. Release. 1, 2, 3, 4. Again. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. Hold. 1, 2, 3, 4. And exhale. 1, 2, 3, 4. One last time. Very good. Support yourself. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. And slowly exhale. 1, 2, 3, 4. Slowly. This was how we do deep breathing. Relax, slow down. Slowing down is very important for your body. तो आप ट्राई कीजिए जब आप स्ट्रेस्ड हैं तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं. ओके. So the next activity that I like to tell you about is mindfulness. Yes, mindfulness. Does anybody know mindfulness क्या होता है? सुना है ये word क्या? Anyone? So as we can hear, mindfulness is a way to become aware of your thoughts and emotions without judgment. आप अपने आप को judge नहीं करते हो and helps you be more accepting of yourself. More acceptance automatically means less stress and worry, which means that you are here in the present. जो चल रहा है आपकी लाइफ में आप वहीं पर हो. आपके थॉट्स कहीं और है, आपकी बॉडी कहीं है, आपके थॉट्स कहीं है, इमोशंस कहीं है, सब अलग अलग. सारी चीजें एक जगह ले आओ, है ना. That is one of the reason we are not able to focus in class at times. Or somebody is speaking, we are not hearing, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. होता है, that's not bad, but there is an activity that we can do to be more focused and to be mindful in the wherever we are. Shall we do that activity? Turn on your cameras, everyone. Ritu, Divyanshu, Lisha, Punita, Kajal, Tushar, Chandradev, Deepak, Subhash, Rahul. Turn on your cameras. We're about to close, so I want to see everyone. So now, turn on, Angel. I want you all to look around yourself. जहाँ पे भी आप बैठे हो ना, look around yourself using your eyes. Tell me any 5 things that you can look around yourself. कोई भी 5 चीजें हो सकती हैं. ये हैंडकरचीफ है,
ये पानी की बोतल है मेरे पास, ये रिमोट है, एक पेन है और एक फोन है. Like that, what all five things do you have? You can unmute and speak or put it in the chat. What all five things can you see using your sense of vision, using your eyes? कोई भी 5 चीजें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ. लीशा, आप कुछ बोल रहे हो क्या? Can't hear you. अच्छा, okay. Put it in the chat. What all can you see? मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ये. I want answers. Can you see something? टेबल, फैन, बेड, मिरर, कबर्ड. ठीक है. बुक्स, टेबल, पेन, स्पेक्टिकल, टाइल. सब पढ़ाई का सामान ही पड़ा है सब. सी. So now this was our first sense, which was vision, using our eyes. Now I want you to. I have notebook, pen, earbuds, phone, clothes, school bag, study desk, water bottle, pillow, chair. Chair, cupboard, trophy. Wow. Pillow and bottle. Okay, great, great. Thank you for sharing, whoever is. तो हमने आईज यूज कर ली अपनी. अब हम यूज करेंगे अपने कान, यार ears. What all can you hear? 4 things that you can hear around you. Any 4 sounds. ध्यान से यूज करो अपने ears को. What all can you hear around yourself? You can unmute and speak. If not, you can type it in the chat box. What all can you hear around you? Where are you? किसी ने कुछ लिखा है? I cannot see. Okay. PC. Kitchen sound, children playing, little fan sound, moving fan, footsteps, talks. Fans movement, ma'am, you, fan, family members. Okay, तुषार को मैं सुनाई दे रही हूँ और किसी को मैं सुनाई नहीं दे रही हूँ. Fan sound. मेरी आवाज आ रही है सबको? Prayer. Okay. ओके ओके ओके, मेरी आवाज भी आ रही है. गुड. ठीक है, तो हमने अपने ईयर्स भी यूज कर लिए. अब 4th है. ओ यस मैम, यूट्यूब. ठीक है. Now using your sense of smell, using your nose, I want you to tell me 2 things that you can smell. कोई भी scent हो सकती है, any smell. Maybe if somebody is cooking at your place, उसकी scent हो सकती है. Maybe a perfume, maybe room freshener, maybe tea, anything. कुछ smell आ रही है, scent आ रही है. Use your nose. बताओ बताओ बताओ. What can you smell? Dinner. Oh, waiting for this session to end so that we can go eat. Dios. ठीक है. और क्या स्मेल हो रहा है और कुछ? डिनर. स्मेल फ्रॉम किचन ऑफ डिनर. सबके घर पे डिनर बन रहा है. वाओ, आई एम एक्साइटेड. यस मैम, डिनर. ओके, ग्रेट. Last one, I want you to tell me one thing that you can taste. So the last sense that is left is our sense of taste. Mouth mein. I know you're not eating right now, but what was the last thing that you had today? Was it water? Was it lunch? Was it some evening snack? Or if you did not, close your eyes and think about it. What is your favorite food item that you really want to have right now and you can taste it? Sweet, water, water.
What can you taste in your mouth? Close your eyes. Sweet, sweet. Oh, मीठा खाया है सबने. Pizza. I want right now. Wow. Yes, we all are hungry now. We'll have dinner, right? So what did we do in this activity? This is a mindfulness activity. Okay, जिसमें हमने पांचों senses use करे. All the five senses. Do you all feel now you are in the present? 10-15 मिनट पहले से better है, लग रहा है कुछ? Do you all think this helped to make you come in the present? Yes. So you can use this when you feel you're not in the moment. आपको पढ़ाई करनी है बट आप नहीं कर पा रहे हो. टेक अ ब्रेक, टेक डीप ब्रेथ्स, वॉक करो नेचर में एंड डू दिस एक्टिविटी. आपको आसपास क्या दिख रहा है? स्पेशली दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन नेचर. गो आउट ऑफ योर होम इन अ पार्क. आई हैड लास्ट वाटर. आप ग्रास के ऊपर वॉक, नीचे क्या फील होता है, राइट? So use these 5 senses. So now I'd like to check in with you all. How are you feeling? And if anybody would like to share, what is something that they would like to take away from today's session? So these are the highlights. What did we learn today? When we pay attention to our thoughts and our body's messages, we can work with our feelings. We can practice some deep breathing, which slows down our breathing. This tells us that we are okay. We don't need to panic. Now, I want to hear from all of you, one by one. Something you will take away with yourself. If you're coming to these sessions, तो कुछ लेके जाना चाहिए हमें साथ में, right? We should learn something. Can be as small as deep breathing. What will be something? I want everybody to type in the chat. And if anybody wants to speak, unmute and speak, you can do that too. But what is one thing you're taking away with you? Okay. How to be more calmer. Okay. Okay. Thank you for sharing. और आप सब क्या लेके जाओगे अपने साथ सेशन से? जानवी, yes? Tell me. यस मैम, जो हॉट थॉट्स और कोल्ड थॉट्स वाला कंसेप्ट आपने एक्सप्लेन किया वो मुझे बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा था. मैं उसको साथ लेकर जाऊंगी, Yeah. अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताऊंगी. Very good. Good. I'm glad. How to be in present. ठीक है. नाइस. सबको लिखना है एक चीज जो वो लेके जा रहे हैं अपने साथ, कोई एक चीज that they will practice in their life. What is it? How to get refreshed when stuck dumb by the exercises. Okay. Okay. Mindfulness technique अच्छी लगी? Okay. Great. Great. What about सबने नहीं लिखा?